At Delhi's Jantar Mantar, a youth-led protest over India's exam paper leaks has entered a more volatile phase. Supporters of the Cockroach Janta Party are demanding the resignation of Education Minister Dharmendra Pradhan after leaks in May affected millions of students. The agitation had already drawn national attention after social activist Sonam Wangchuk began fasting in solidarity with the students on June 28th. But on Saturday, authorities moved him to Delhi's Safdarjung Hospital after his condition worsened. Abhijit Dibke says Wangchuk was forcibly moved and announces his own indefinite hunger strike. क्रिमिनल्स लोगों को किडनैप करते हैं, वैसे सोनम सर को किडनैप किया और जबरदस्ती घसीट कर यहाँ से लेकर गए। उन्हें ये लग रहा था अगर वो सोनम सर को यहाँ से हटा देंगे, जबरदस्ती उठा ले जाएंगे तो ये आंदोलन खत्म हो जाएगा, आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन अब सोनम सर की जगह मैं इंडेफिनाइट हंगर स्ट्राइक पर बैठ रहा हूँ। मैं अपना अनशन शुरू करने जा रहा हूँ। CJP founder Abhijit Dibke accused authorities of trying to weaken the protest by removing Wangchuk from the site. He then announced that he would begin an indefinite hunger strike in Wangchuk's place. Moments later, the protest took another dramatic turn. As Dibke addressed supporters, a woman threw ink at him, triggering a brief scuffle at the site. Outside Safdarjung Hospital, security was tightened as doctors monitored Wangchuk's condition. Hospital officials said the 59-year-old activist was weak and mildly dehydrated after prolonged fasting but stable and alert. Charu Bamba says Wangchuk is weak, mildly dehydrated but stable. वो लंबी फास्टिंग की वजह से वे थोड़ा कमज़ोर हैं, थोड़ा डिहाइड्रेशन है, बाकी उनके वाइटल पैरामीटर सारे स्टेबल हैं। उनको लगातार जांच कर रहे हैं, उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। वैसे वो फुली अलर्ट है और स्टेबल है। But Wangchuk's wife, Geetanjali Angmo, questioned how transparent hospital authorities were being. She said the family had not been given full access to his medical reports and objected to restrictions on his phone. Geetanjali Angmo says there is no transparency and compares the hospital to a prison. क्लियरली ये कहा है कि कुछ भी ओरल या इंट्रावेनस बिना मेरी कंसेंट के उनको नहीं दिया जाएगा और जो भी दिया जाएगा वो रिपोर्ट के बेसिस पे दिया जाएगा, लेकिन वो हमें वो रिपोर्ट दिखा तो रहे हैं जिसमें 2.9 है उनका पोटेशियम, लेकिन दे नहीं रहे। तो इसीलिए ये ट्रांसपेरेंसी की वजह से मुझे ये ट्रस्ट में प्रॉब्लम आ रहा है। और ऊपर से अगर ये मेडिकल ही इशू था तो इतने पुलिस यहाँ क्या कर रही है? और सेकेंडली हमारा फ़ोन हमें क्यों नहीं ले जाने दिया जा रहा सोनम को? तो ये जैसे सफदरजंग हॉस्पिटल नहीं है, जैसे सफदरजंग प्रिजन है, ऐसा लग रहा है। The protest has become a rare public challenge to Prime Minister Narendra Modi's government, fueled by student anger and amplified by social media. At its center is a demand for accountability over exam leaks that disrupted the lives of millions of young Indians. Security was also visible outside Education Minister Dharmendra Pradhan's residence as protesters prepared to escalate their campaign. CJP protesters now say they will march to India's parliament on July 20th, the day the monsoon session begins. Their demand is that Pradhan must resign and India's exam system must be reformed.